to those which will cover all these combinations. ऐसे मिनिमम टेस्ट केसेस हमने डिवाइस करने हैं जो कि जो इंट्रैक्शन फेलियर्स को डिटेक्ट करे, और ये सारे कॉम्बिनेशंस जो है सारे नहीं देंगे एरर, कुछ देंगे, तो वो उनको भी कवर कर लेगा, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 84 या 84 और 64 तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन अ ह्यूज सॉफ्टवेयर विद नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ लेवल्स, वी कैन नॉट थिंक ऑफ executing all the test cases. Now, compatibility testing. Now, suppose there's a web application. Now, web application can run on different platforms. We know that. Now, suppose there's a web application X, which can be used on Windows and it can be used on Mac. Okay. Now, so we will have a environment which will consider of the hardware, operating system, browser. Now, suppose we let us suppose a web application with X. Now, X can work on a variety of hardware, OS, and browser. So we have three factors, suppose hardware, OS and browser. All right. So ये हो गया. अब ये hardware, OS और browser हमारे factors हैं और ये इसके levels हैं. ठीक है ना, ये इतने सारे levels हो सकते हैं जिसपे हम ये this is the environment for our web application X. It can run on this machine, it can run with this operating system, it can run with this browser. So these many, you just imagine the number of combinations we can have. So there are 75 factor combinations. Now, there are 75 factor combinations, but there are some of the combinations which are infeasible. So now we're talking about infeasible combinations. So for example, Mac is an OS for Apple, so it will not work on Dell series. So ऐसी combinations जहाँ पे Mac OS हो और Dell computer हो, तो it is an infeasible combination. It's not possible. Similarly, Safari browser is used for Apple computers and not for PC. तो अगर किसी combination में Safari और PC आ रहा है Dell series का, तो वो भी it's a wrong combination or it is an infeasible combinations. So this is how some of the combinations, when we talk about environmental factors or the configuration, they might be infeasible also, and they might not be required for testing. तो अगर हम अगर ये मैनुअली इन्होंने इनफीजिबल कॉम्बिनेशंस चेक करी और इन्होंने देखा कि 40 इनफीजिबल फैक्टर कॉम्बिनेशंस हैं which correspond to the hardware OS combination. So we are left with only 35 which are to be tested. So this is just an example of a reducing combinations by eliminating the infeasible combinations. So that has to be manually seen, that whatever is possible and whatever is not possible. So all right, so this is the concept of infeasible combinations in case of and it also reduces combinations. So if there are some infeasible combinations, they should be removed to reduce the combinations, and hence thereby the test cases will also get reduced. All right. So that's what we said. So we will now, so basically what is our problem? तो ये तो हमने सब पढ़ लिया. तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन की, और हमें सबसे बड़ा कैच जो है, हमें चाहिए नंबर ऑफ टेस्ट केसेस शुड बी रिड्यूस्ड. ऑल थ्रू दिस कोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वी हैव बीन लुकिंग एट टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, क्योंकि हम इतने सारे टेस्ट केसेस नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट. सो हमारी हमेशा कोशिश है कि हम कैसे जो है इफेक्टिव टेस्टिंग करें, क्योंकि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, सारे टेस्ट केसेस हम नहीं एग्जीक्यूट कर सकते. सो आवर objective is to reduce the number of test cases. So one possible way for doing that is combinatorial testing, which reduces the input interaction testing, where the inputs will interact. So let us see now how we do combinatorial testing. We'll see the architecture, or we'll see the setup for the combinatorial test design process, how it works. So these are the levels. First we model the input space. All right. So modeling मतलब आप input factors define करो और environment के भी factors define करो. वही अभी तक हमने सीखा है कि input space जो है variables की, उसके कितने factors हैं और levels हैं, और किस environment में वो hardware में वो काम कर रही है application, उसके factors और levels, OS, hardware and what all.
browsers, etc., etc. So first step is determining the factors and levels of the input space and of the environment. Then we generate a combinatorial design. Now, what is this combinatorial design? So first step is modeling the space. And then this model, that is your number of factors and number of levels of the factors, is input to a combinatorial design. So this will produce a combinatorial object. And what is a combinatorial object? It is basically an array of factors and levels. ठीक है? तो बेसिकली जो ये कॉम्बिनेटोरियल ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं हम, जो कि कॉम्बिनेटोरियल डिजाइन बनाता है, उसका आउटपुट जो है वो एक हमें एरे मिलेगी. एरे किसकी है? फैक्टर्स की और लेवल्स की. क्योंकि हमें जो है इंटरेक्शन फेलियर्स फाइंड करने हैं. सो वी विल गेट एन अरे ऑफ फैक्टर्स एंड लेवल्स. सो वी आल्सो कॉल दिस एज अ factor covering design. Now, each row in this array generates at least one test configuration or one test. So basically, you'll get arrays. We'll see that in later lectures also. We'll see that what are the various techniques for generating this combinatorial object. So how can we do the combinatorial design process? So each will generate at least one configuration or one test input. All right, so let's move further. Now we will see the various procedures for generating this combinatorial object. तो हम अब पढ़ने वाले, ये तो हमारा, हमने इतना तो पढ़ ही लिया फैक्टर्स और लेवल्स का. अब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से एक कॉम्बिनेटोरियल ऑब्जेक्ट को जनरेट करेंगे. मींस वी आर नाउ गोइंग टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, that how, what is our combinatorial design, so as to generate this combinatorial object, which is basically nothing but an array of factors and levels. Okay, so now our focus is studying the various procedures for generating the combinatorial object. Now, what these procedures use? They use some concepts, some ancient mathematical concepts for generating the combinatorial object, and these are Latin squares, orthogonal arrays, mixed orthogonal arrays, covering arrays, and mixed level covering arrays. So we'll be studying all these procedures basically. We'll be studying all these concepts basically. So all these procedures are used in software testing. लैटिन स्क्वायर से भी हम कॉम्बिनेटोरियल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑर्थोगोनल एरे से भी, मिक्स्ड से भी, कवरिंग से भी, मिक्स्ड लेवल से भी. लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर है वो है कवरिंग एरेज और मिक्स्ड लेवल कवरिंग एरेज. ठीक है, दे आर द मोस्ट यूजफुल वन. We will study all these 4-5 techniques for generating the for generating these arrays of factors and levels. But from all of these, ये जो कवरिंग एरेज है और मिक्स लेवल कवरिंग एरेज है, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज है और मोस्ट यूजफुल है ये. इज दैट ऑल राइट? यस, अभी तक क्लियर है सबको? तो बेसिकली ये अब हम, ये टेक्निक्स हो गई आपकी कॉम्बिनेटोरियल टेस्टिंग में. ये जो है, these are the various procedures for generating the combinatorial designs, or what you can say combinatorial object. ठीक है? Yes, आगे चले? Yes, Yes, ma'am. चले आगे. Now, combinatorial design process कैसे बनता है combinatorial design? आपने अब हमें, हमारे पास फैक्टर्स हैं और लेवल्स हैं, and we have to generate test cases. So we have seen that combination of factor levels is used to generate one or more test cases. So we have to see that what all factors and what all levels will be there in the test case. Okay. Now, how we are going to do this combinatorial designing, or how we are going to uh, generate the factors array uh, for deriving the test cases. So for that, we'll read now. First of all, what we'll read is a fault model. ठीक है, अभी तक क्लियर है? अभी तक ये क्लियर है कि हमने कॉम्बिनेटोरियल टेस्टिंग करनी है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा है. और हमने हमने पढ़ लिया कि हमारी कॉम्बिनेशंस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमारी इनपुट डोमेन बहुत ज़्यादा है और हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं. तो इसलिए हमारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा है और वो हम हैंडल नहीं कर सकते, सारी टेस्टिंग नहीं कर सकते. इसलिए हम कॉम्बिनेटोरियल टेस्टिंग करेंगे, जो कि इफेक्टिवली टेस्ट केसेस को मिनिमाइज करेगी और ऐसे टेस्ट केसेस निकालेगी जो कि जो भी कुछ इंटरेक्शन फेलियर्स हैं, दे आर brought into they are taken care of, and those other interactions which are not liable to bring error also, they are also taken care of.
So that is therefore it's a very you can say it's a powerful technique for reducing or minimizing the test cases when we consider interaction faults. And we have seen that interaction faults has to be considered because in real life the our variables ऐसा नहीं है कि एक ही variable है हमारे पास n number of variables है software में, and there is a possibility that for certain combinations or interactions of the variables error might be produced. So therefore combinatorial testing is to be studied, and it is effective way for minimizing the test cases because we cannot test all the combinations. So what we are going to study is, first of all, what is a fault model. So what is a fault model? So combinatorial design or testing technique is basically for finding faults due to interactions. ये तो अब हमको clear हो चुका है. तो faults which are aimed by this combinatorial testing or combinatorial design techniques are known as interaction faults. तो ये कौन से तरह के faults निकालेंगे? ये interaction faults हैं. जैसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन से तरीके के फॉल्ट्स निकालेगी? वो निकालेगी जो कि कोड में है, एग्जीक्यूशन के टाइम में. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वो निकालेगी जो कि रिक्वायरमेंट्स के ऊपर से निकालेगी, ठीक है ना. उसी तरीके से डेटा फ्लो टेस्टिंग निकालेगी डेटा डेफिनेशन और यूजेस के बीच में अगर है. तो ये जो कॉम्बिनेटोरियल टेस्टिंग है ये किस तरीके के फॉल्ट्स निकालेगी? ये इंटरेक्शन वाले, जहां इनपुट वेरिएबल्स की इंटरेक्शंस हो रही हैं. सो फॉल्ट्स विच आर targeted by the combinatorial testing or combinatorial design techniques are those of the type of interaction faults, which are where two or more inputs are interacting. Now we say that an interaction fault is triggered when a certain combination of input value causes the program containing the fault to enter a valid input. ठीक है ना, certain combination. आपके एक फैक्टर 10 वैल्यूज ले सकता है, दूसरा फैक्टर 20 वैल्यूज ले सकता है, लेकिन कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होगा उस लेवल्स का या उन दो फैक्टर्स का कि जहां फॉल्ट होगी. सब में नहीं फॉल्ट होगी, सब में फॉल्ट नहीं होगी. सो दैट इज व्हाई इट इज फाउंड दैट a smoothly running program suddenly gets stops working if an environment is changed or if some configuration is changed, because the certain combination of those input variables might produce a error. So that is what is interaction fault. So certain combination of the input factors or their levels will trigger the interaction fault and lead to the program to fail or to stop or to enter into an invalid state. All right. Yes. ठीक है. तो ये हो गया interaction faults. What is an interaction fault and what is a how it can happen. Now we have now see interaction faults is happens when there is an interaction between the values of the factors or the levels of the factors के बीच में. Certain combination of the levels will cause the program to stop or go into this thing undetermined state. Now all right, now see the fault which is triggered by one input variable, that is t is equal to 1, regardless of the values of other input variables, are known as simple faults. ठीक है. अभी तक हमने जो फॉल्ट्स पढ़ी हैं वो सिंपल फॉल्ट्स हैं, क्योंकि हमारे पास हो सकता है 10 वेरिएबल्स हैं प्रोग्राम में, लेकिन हम एक एट अ टाइम हम एक ही वेरिएबल पे फोकस कर रहे हैं फॉल्ट को डिटरमिन करने के लिए. सो दैट इज अ सिंपल फॉल्ट व्हेन t is equal to 1. When you have t is equal to 2, number of factors now you take 2. So faults caused by the two factors simultaneously we are taking them, so they are known as pairwise interaction faults. All right. So for if you increase the number, three-way interaction faults ho jayenge. Similarly, therefore we call it as t-way interaction faults, where we consider the faults because of the interaction of two or more inputs. If it is only one, it is a simple fault. So all right, is this clear? Yes. T-way interactions, yes. चले आगे कि नहीं? हाँ? Are you hearing it? This is all going to come in the NSEMs. Midsem में नहीं आया, तो NSEM में तो आएगा ही आएगा.
So अब एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल लेते हैं, 3 इनपुट्स हैं x y z. ओके, और x ले सकता है, x का इनपुट डोमेन ये है x1 x2 x3, और y का इनपुट डोमेन है y1 y2 y3, और z का z1 z2 z3 है. दिस इज द इनपुट डोमेन्स ऑफ दीज वेरिएबल्स. ऑलराइट, और उनको आप लेवल्स भी बोल सकते हो इन फैक्टर्स के. x y z फैक्टर्स हैं और उनके ये 3 लेवल्स हैं इनपुट डोमेन के. Now, let us suppose that this program outputs the function f(x, y, z) when x is equal to x1 and y is equal to y2, and it outputs a function gxy when x is equal to x2 and y is equal to y1. So I'm just taking some combinations, and this is the output when x is equal to x2 and y is equal to y2. So suppose this is the program. This is the program. Now this program is giving these values. ठीक है, यही चीज वहां लिखी हुई है, बेसिकली यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि when x is equal to x2 and y is equal to y2, it will give this thing. It will give you this thing, this x, y, z, and this thing. Now, suppose this statement is not written correctly. There is another condition, and that is when x is equal to x1 and y is equal to y1. अभी हमने लिया x is equal to, if you see that if x is equal to x2 and y is equal to y2 पे ये वाली स्टेटमेंट होगी, प्लस वाली जो है. लेकिन अगर ये प्रोग्राम में गलती हो गई हमसे, सोचो, और हमने ये वाली स्टेटमेंट मिस कर दी कि जब x is equal to x1 है और y is equal to y1 है तो ये नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हमारी एग्जीक्यूशन होना चाहिए माइनस. लेकिन हम सोचो ये पोर्शन मिस कर जाते हैं, तो फॉल्ट तो आ गई है. अब ये कैसे ये डिटेक्ट होगी? ये कैसे डिटेक्ट होगी? नाउ दिस प्रोग्राम कंटेन्स वन एरर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सम wrong statement or missed statement in the program. And what is this error is that the program must output this minus when x is equal to x1 and y is equal to y1, and when x is equal to x2 and y is equal to y2, then it must output this plus. तो हमने सिर्फ यही स्टेटमेंट लिखी है और ये स्टेटमेंट बाई चांस हम मिस कर गए हैं. So this error will be revealed only when this value is not equal to this value. ठीक है ना? अगर तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, माइनस और प्लस वाली, तब तो ये एरर रिवील होगा ही नहीं. लेकिन जहां ये माइनस और प्लस वाली वैल्यू अलग है और कोई भी वैल्यू z की हो जाए तो ये वाला एरर आ जाएगा. So if f of x1 y1 minus g is not equal to f of x1 plus this thing, then the value will be error will be revealed. All times when both of them are same, the error will not be revealed. So this is an example of a pairwise interaction fault. So only when x and y interact in a certain way. So basically here in this example, it is a missing condition. This is a missing condition. हमारे से गलती हो गई और हमने ये condition लिखना हम भूल गए. So this is a missing condition which is the cause of a pairwise interaction fault. So when the certain combination, pairwise क्यों? क्योंकि certain combination of x1 y1 जब होगी तब जो है ये error detect होगी, नहीं तो ये error detect नहीं होगी. तो वो कौन सी वाली कंडीशन होगी? जब ये माइनस और प्लस जो है ये सेम नहीं होंगे. So therefore we call it as it's a pairwise interaction fault. क्योंकि इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, इसमें दोनों इन्वॉल्व हैं फॉर डिटेक्टिंग द फॉल्ट. Is that clear? Pairwise interaction का example, and this is an example, and the cause here is a missing condition. Missing condition गलती हो सकती है प्रोग्रामर से, missing condition, but it is an example of a pairwise interaction fault because the fault here will be detected only when both of them are considered together. एक उससे नहीं होगा. Yes, and that too when they interact in a certain with certain values. Yes. Is it clear? Interaction fault, pairwise interaction fault because of a missing condition. Now we will take a three-way interaction fault. A three-way interaction fault का example लेते हैं हम. Now three-way interaction fault के लिए example लेते हैं. Let us suppose this is the program. Now suppose again this program is written like this. Now this has got an error. This must be written as x minus y into z, and it has been written by as x plus y into z. Now there are three variables, x, y, z input. Now x has the input domain minus 1, 1, z is from this thing, and y is also from minus 1. So these are the input domains for the three variables.
Now here the fault is triggered for all those inputs such that x plus y is not equal to x minus y and z is not equal to 0. तो यहाँ तीन variables हो गए x, y और z. If you remember in the previous example, it was a two-way interaction because z was a don't care then. So now for a certain condition of x, y, z only, this particular fault will be detected because if x plus y cross asterisk z is not equal to x minus y asterisk z, only then the fault will be detected. So this becomes a three-way interaction fault, and that will be detected only for certain combination of x, y, and z. Yes. And what is yes? So it will be revealed by only two of the eight combinations, minus one, one, and again one more value of x, y. So only for certain values of x, y, and z, because here z is also involved, and therefore we will have, it's called a three-way interaction fault, and this has been caused because of a faulty statement. That was because of a missing condition, and this is caused by a faulty statement written by a programmer. Right? Is this clear? Example of two-way interaction faults and three-way interaction faults. The first case, we took a case of the missing condition, and second was a wrong statement. Now let us introduce one more terminology, which is called fault vector. So now we have seen that a T-way fault, T-way matlab two-way fault, three-way fault, four-way fault, is triggered whenever the subset of k factors is set to some set of levels. ठीक है ना? ये हमने देख लिया ना, हमने पहले में देखा कि there were three factors x, y, z. Now it was a two-way fault में x और y के कुछ interaction से fault हुई. And it can be in the second example, we saw that it is all the three factors. So it's a three-way interaction. So we say that a T-way fault is triggered whenever a subset means T is less than K or it can be equal to K. Number of factors, like पहले केस में हमारे 2 थे, फिर दूसरे केस में तो 3 ही हो गए. तो it can be T can be equal to K or less than K. Okay, is set to some set of levels. So then only the T-way interaction or T-way fault or T-way interaction fault is triggered. So suppose that we have K factors, F1, F2, Fk, and each at Qi level. So I is what? I is varying between 1 and K levels. So we say a vector V. Now let us define a fault vector. We are defining a fault vector. So a vector V of factor levels. Factors are L1, L2, this thing chalenge. Where I varies from 1 to K is a specific level for the corresponding factor. So V is also known as a run. So suppose that there are K factors and each is having at Qi, suppose कोई भी उसका level है. So I is varying again from 1 to K. So vector will be actually you can say it is an array of factor levels. Where it is a array of factor levels. ठीक है ना? ये factors हैं और ये उसके levels हैं. L1, L2, Lk. ठीक है ना? और L can vary from I to K. जैसे a variable can take values, X can take values from any number of values. So basically these are the levels or the values which these factors can take. So, okay. So, and a specific level for the corresponding factor is known as a run. So if it is जो एक particular combination, अगर हमारे पास 5 factors हैं और 5 factors suppose 2 3 values ले सकते हैं, तो एक जो particular configuration होगी, that is called a run. That is called a run of the values. Now this run is categorized as a fault vector. So run तो हो गया array of values which that factors can take. Now a run is a fault vector if the execution of P against a test case derived from T. So अगर जो run में जो values हैं L की, उसमें से अगर जो कोई test case derive होता है और वो fault देता है, then we call that this run V is a fault vector. तो run तो एक generic term हो गई, all kinds of factor levels की combination के, लेकिन उसमें से जोन सा run जो है वो अगर if the test case is derived from that run which causes the triggering of a fault
or execution of a fault, then we call that as a fault vector. So a T-wave fault vector will trigger a T-wave fault in P. ठीक है ना? तो अगर T-wave fault vector है for P, that will trigger a T-wave fault. So if suppose there are K factors मतलब X, Y, Z, suppose X, Y, Z 3 factors हैं. तो it means that there are K minus T don't care entries in a T-wave fault vector. अगर सोचो, suppose just take an example, K is equal to 3, ठीक है ना? X, Y, Z 3 factors हो गए. Now I am talking about a two-way fault vector. तो एक रह गया, तो इसका मतलब 3 minus 2 1. 1 is a don't care entry. वही हमने करा है Z के लिए. Z is a don't care entry when we are considering only two-way interaction. Suppose there are 5 factors और 5 factors में हम 3-way interaction कर रहे हैं, तो 2 जो बच जाएंगे factors वो basically don't care है, क्योंकि हम उनको bother ही नहीं कर रहे हैं, हम 3 की interaction देख रहे हैं. तो two-way fault vector होगा जैसे 2 3 this thing, because the third factor is a don't care. So we are now only talking about two-way interactions. So here, when factor 1 is set to level 2 and factor 2 is set to level 3 and factor 3. So these are the levels. So fault vector is basically the combination of levels which the factors can take. And if it is a T-wave fault vector for and the number of factors is K, then there will be K minus T don't cares. So if suppose there are X, Y, Z 3 factors or 3 variables और हम two-way interaction find कर रहे हैं, तो हमारी एक है 3 minus 2 1, एक एंट्री जो Z की है वो don't care हो गई, और ये जो है levels हैं. So this is one run, and that run, it is a fault vector. Basically, it is also a run, and it is that run which produces a fault, a two-way interaction fault. ठीक है? Is this clear? Fault vector, run. Yes. So fault vector is basically a run which triggers a fault. And what is a run? It is a combination of values of the factors. Is that clear? Yes? Or is it getting too much? Too many definitions? Yes? Should we stop here or should we move further? You want me to go ahead? Yes? No response? This much is enough. Anji? Is it okay? Or should we stop here for today? Because बहुत heavy हो गया, बहुत सारे definitions हो गई हैं. Yes, ma'am, काफी हो गया. Yes, ma'am, काफी हो गई. ठीक है ना? तो अभी हम आज यहाँ stop करते हैं. अब कल से फिर हम fault vectors का example लेंगे with lattice squares. So then we'll see all these one by one. So we'll stop here. आप इतना ही revise कर लो अभी. अभी हमने आज करा फिर fault vectors तक. मैम पीपीटी अपलोड कर दीजिएगा प्लीज ये वाली. पीपीटी तो मैं अपलोड कर ही दूंगी, लेकिन आपने कुछ इसमें सुना भी है? पीपीटी बनाते बनाते तो मेरी हालत खराब हो जाती है, इतना सब देख देख के समझा के. पीपीटी तो मैं लोड कर दूंगी, लेकिन एक बार ये जो है ना लेक्चर पूरा हो जाए कॉम्बिनेटोरियल का, तो ये अब फिर कल से हम ये स्टार्ट करें. एग्जांपल लेंगे फॉल्ट वेक्टर का और फिर वी विल स्टार्ट विद लैटिस स्क्वायर्स. देन वी विल सी द वेरियस प्रोसीजर्स. सिंपल है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है. फिर ये जो जितनी टेक्निक्स हैं जो है ना वो बस पढ़नी है. लैटिस स्क्वायर्स, देन MOLS, देन कवरिंग अरेज, इसमें 4-5 जो प्रोसीजर्स हैं बस कॉम्बिनेटोरियल टेस्टिंग के जो जनरेट करने के. ठीक है? दैट इज नॉट स्लाइटली लेंथी है टेस्टिंग, स्लाइटली लेंथी. आप लोगों का प्रैक्टिकल्स कैसा चल रहा है भाई? One day I'm going to take your demo, after the midterms. Be prepared for it, क्योंकि वही फिर मैं मार्क्स दूंगी आपको फिर. Is that fine? Yes? Yes, ma'am. है ना? मिड सेम के बाद फिर एक दिन मैं आप लोगों का डेमो रखूंगी और मैं कुछ क्वेश्चंस अब डालूंगी भी. आई डोंट नो हाउ दीपक इज डूइंग एंड व्हाट ही इज डूइंग इट. सो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑन कॉम्बिनेटोरियल एंड ऑन जो भी मुझे. आई जस्ट सी योर दिस लैब क्लास के उसने क्या क्या दिए हैं, कुछ मैं और डालती हूँ. और एक दिन फिर आफ्टर योर दिस मिड सेम्स, आफ्टर दिवाली में भी, so we will have some few classes for demos. I want to see what you have done. चलो अब मैं आपको एक अटेंडेंस आपकी फ्लोट, इस पे भी मैं क्वेश्चंस कुछ अपने आप से भी डाल देती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट दीपक इज डूइंग.
I've not seen what all questions he has posted, you know. So be prepared for demos after Diwali, you know, because we must have lab demos also. Neglecting. So 4th November attendance. Today is 12:43 now. 12:50 तो डाल देती हूँ मैं. ठीक है, देखो आप लोगों को आ गई है. Have you received the attendance? Yes. Have you received the attendance? Yes, ma'am. ठीक है, then I'm leaving the meeting then. Okay, all the best to all of you.